And kind, and the food is great. Yeah, it's a wonderful experience, a dream come true. Sure, thank you very much. And tell us something about your role in the movie and how did you come about? Any challenges that you might have faced while shooting? Oh, while shooting, well, COVID hit us, so we stopped production, but we kept fighting like our production always did. We fought for years to get this movie made. One of the challenges, obviously, is the interior of Willie Pep, who he was inside, and the exterior of Willie, which is how he fought, because he was such a winner inside the ring and outside the ring. He was losing with his marriage, his finances, his relationship with his children. So I had to balance both of that. Training quite a bit because he was so special inside the ring. But it was a thrill to play Willie and a great honor, and I am glad that he is now in cinematic history. Sure, thank you very much. Bennett? Hi, Bennett. How are you doing? I'm good. How are you? Very well, thank you. Tell me about your experience at IFFI so far. Oh, it's been an absolute dream. It's as magical as you could imagine. And how did you come about to produce this movie? I came attached along with Rob to this project about 5 years ago, and it's been as fun as you could imagine. Well, thank you very much, all of you, for being here. Always had a thing for good-looking clothes. I spent a lot of money on wardrobe. With being champ, but it looked like one too. Now this suit really paid off for me. Yeah, looking sharp. What do you think? Huh? I got nothing? You're gonna give me nothing? Nothing? You get that. You keep this camera off my wife. I guess I can't sell you. Take a picture. It'll last longer. Hey, Herman. I see this. This was a gift. A good gift. Bob Hope. You believe that? He gave me this. He came to all my fights. This is engraved. It says, for the champ, you're always a pleasure to watch. You'd expect better from Bob Hope. She's cute. That's why I keep her around. You almost ready? I'm almost ready. तो क्या शानदार सफर रहा पिछले 9 दिन इफ्फी 2023 का। जैसा आपने कहा, कैचिंग द डस्ट से लेकर फेदरवेट तक बेमिसाल फिल्में और साथ ही इन कॉन्वर्जेशन सेशंस, मास्टर क्लासेस। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी श्यामा। श्यामा, आपने पिछले 9 दिन यहाँ गोवा में बिताए और बहुत सारी इन कॉन्वर्जेशन क्लासेस भी आपने अटेंड किए। आपके लिए पर्सनली क्या हाईलाइट रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वी हर्ड रानी मुखर्जी जो लास्ट लेग में था। तो रानी मुखर्जी का जो चीज़ था, व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज वेयर शी सेड दैट यू शुड एक्सेप्ट रोल्स विच इज़ ऑफ योर एज। आप स्टूडेंट का भी रोल कर लो इफ़ यू आर 45, नो इशू इन दैट, बट आप वैसे भी रोल्स करो जो आपको सूट करे। यू ऑल शुड मेंटेन दैट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑडियंस लाइक्स टू कंज्यूम दैट। उसके बाद में द बिगेस्ट ऑफ ऑल वॉज माइकल डगलस। वी हर्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday and today I was there in that in conversation session where he has talked about his father, how it was to come out of the shadow of his father, because Kirk Douglas के काम भी हैं जो माइकल डगलस के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा का तो स्रोत है ही, बट उनके लिए एक चैलेंज भी था कि उससे वो कैसे बाहर निकले। तो ही स्पोकन अबाउट दैट। देन उसके बाद में उन्होंने इंडियन फिल्म्स में वो क्या करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू डू अ सीक्वल ऑफ रोमांसिंग द स्टोन, बट वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया यहाँ पर। तो अब वो यहाँ पर आके, चूँकि अब भारतीय सिनेमा इतना
इसके क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बढ़ चुका है, तो अब वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। वेल, आई हैव टू अमेजिंग लेडीज हियर विद मी एंड ऑब्वियसली श्यामा ने बात की यहाँ पे रानी मुखर्जी का जो ओपिनियन था विमेन सिनेमा के बारे में, किस तरह से एज अप्रोप्रिएट रोल करने चाहिए। हमने बात की थी विद्या बालन से भी, जो कह रही थी कि किस तरह से आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर एक्टर्स को अपने आप को पुश करना चाहिए। किस तरह के एक्सपीरियंस देखती हैं आप? ऑब्वियसली इफ़ी ने एक ब्रेकिंग द सीलिंग वाला काम जो करता है, इंटरनेशनल सिनेमा यहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं विमेन रोल में भी? आपको कैसा लगता है जो फिल्में हमें देखने को मिली हैं इस साल? देखिए, इस बार हमने देखा कि जो 15 सिलेक्टेड फिल्म्स थी गोल्डन पीकॉक के लिए, विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, उसमें से कई सारे फिल्म्स हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं, विमेन के रोल दिखाते हैं या विमेन ने बनाई हुई हैं, वैसे वाले हैं। अब आप देखें ओवर द इयर्स काफ़ी सारे विमेन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स ये यहाँ पर मेन स्ट्रीम रोल कर रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि भाई सपोर्टिंग कर रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं है, वो सीन पूरा बदल चुका है। एंड इफ़ी हैज़ रियली बिन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग दैट पुश, एंड वो हमने यहाँ पर देखा भी है। अगर हम बात करें एक और टॉपिक की, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, विच इज़ दी ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड, जो कि यहाँ पर दिया जाता है फॉर दोज फिल्म्स जो महात्मा गांधी के पीस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस के इन सब वैल्यूज़ को बेस्ट पोर्ट्रे करते हैं। तो हमने उनके भी जो जूरी मेंबर्स थे, उनसे बात की, रिजवान अहमद हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उनसे भी हमने बात की टू अंडरस्टैंड कि क्या एलिमेंट था जो वो एक चीज़, क्योंकि पीस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस तो वी ऑल नो कि वो सारी चीज़ों को फिल्म में होना है, बट व्हाट वाज दैट वन एलिमेंट which they like the most? Humanity is that one element. Absolutely, I think ये बहुत ही एक अमेजिंग एस्पेक्ट है इफ़ी का, क्योंकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, लेकिन ये यूनेस्को ICFT मेडल जो दिया जाता है, क्योंकि फिल्में ऑब्वियसली हम थोड़ी देर पहले मिस्टर मुर्तज़ा से भी यही बात करते हैं, उन्होंने ग्रीन इकॉनमी को किस तरह से फिल्म मेकिंग के साथ टच किया था कि जितना हम अपने आप को सेंसिटाइज करेंगे ह्यूमैनिटी को लेकर, सोशल इश्यूज को लेकर, उतना ही नेचुरली हर आर्ट का यही फर्ज रहता है इंसान को और उसकी सेंसिटिविटी को, उसकी सेंसिबिलिटी को एनहांस किया जाए। लेकिन प्रेजेंटिंग एन एक्सक्लूसिव अवार्ड फॉर दैट, डेडिकेटिंग एन एक्सक्लूसिव सेक्शन फॉर दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टैचर एंड द रेंज ऑफ IFFI एज अ फेस्टिवल। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग सेक्शन दैट वी हैव हियर। एब्सोल्युटली, फिल्में आखिरकार होती तो समाज का आईना है अक्षय, एंड यू वुड आल्सो एग्री विद मी श्यामा। और जब फिल्में समाज के हर एक एस्पेक्ट को दिखाने में कामयाब होती हैं, तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग एज एन आर्ट अपने आप में कामयाब है, और हमने समाज के हर एक एस्पेक्ट को यहाँ IFFI 2023 में देखा है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्रीज़ की, इस बार IFFI 2023 में डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए एक स्पेशल सेक्शन भी था, तो क्या आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देख पाएँ? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। मैं एक मूवी भी नहीं देख पाई हूँ, बट उनकी स्टोरीज मैंने डेफिनेटली सुनी है। वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज, जैसे हम कह रहे थे कि IFFI इज़ अ प्लेस जहाँ पे सबको कुछ ना कुछ मिलता है, एंड एवरीवन कैन कम एंड प्रेजेंट देयर पिक्चर्स ऑल्सो। देयर वाज अ गाय 22 ईयर ओल्ड, ही मेड हिज फिल्म, डॉक्यूमेंट्री उसने बनाई है प्रदक्षिणा करके। इट्स अबाउट वन डे फिल्म जहाँ पे फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ दे डू देयर जर्नी इन वन डे, एंड फिर हाउ लाइफ्स चेंज, हाउ दे चेंज, उसके बारे में था। तो द हाईलाइट ओवर हियर इज़ कि 22 ईयर ओल्ड फिल्म मेकर इज ऑल्सो देयर, बड़े बड़े नामचीन और ऑल्सो देयर। It's one platform where 22-year-old Prathamesh Mahale is there, and 79-year-old Michael Douglas is also there. So this is one platform. Documentaries के अलावा अगर आप ये भी इन कॉन्वर्सेशन की भी बात करें, तो वहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री को लेके इन कॉन्वर्सेशन सेशन था, इंडियन डॉक्यूमेंट्री ऑन वर्ल्ड स्टेज। सो वी स्पोक टू कार्तिकी गोंसाल्विस एंड वी ऑल्सो स्पोक टू रसूल पुकुटी। तो उन्होंने भी रोड टू ऑस्कर्स के बारे में ये बातचीत की थी। सो you don't have to make a film keeping in mind कि आपको अवार्ड जीतना है. You have to make a best film. You have to keep a simple film. Rest is history. Rest is journey. वो This अपने is आप really amazing. I totally second that opinion क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, फीचर नॉन फीचर फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती हैं. जैसा आपने बात किया कि 22 साल के एक लड़के ने अगर एक फिल्म बनाई है और उसको वो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने का मौका मिल रहा है, उसको एक वॉइस मिल रहा है, उनको एक अपनी एक विजन शेयर करने का अवसर मिल रहा है, और साथ के साथ वो एक्सपीरियंसेस जो लोगों को 40-50 साल एक्सपीरियंस करने के बाद अपने आप एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो यहाँ पे मास्टर क्लासेस में, इंटरेक्टिव 1-to-1 सेशंस में, Q&A सेशंस में वो शेयर करते हैं और बहुत ही एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस रहता है. मेरे को लगता है कि किसी भी फिल्म फेस्टिवल में ये एक जो एस्पेक्ट होता है वो IFFI को जो बहुत स्पेशल बना रहा है वो यही है कि एक अमेलगमेशन है, एक मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे यंग
talents का, senior experience का, veterans का, international filmmakers and local filmmakers, and we are in the 17th year as a permanent venue in Goa here. गोवा एक कमाल का, जिसे कहते हैं ना, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स में बात करते हैं टाइमिंग और प्लेसमेंट की। मुझे लगता है कि ये जो साल का जो महीना है नवंबर का, बहुत ही शानदार महीना है, क्योंकि बच्चों के दिसंबर में एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं, तो उससे पहले का ये जो एक ब्रेक पीरियड चल रहा होता है, विंटर्स ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं, और कमाल की प्लेसमेंट है। व्हाट प्लेस लाइक गोवा, नथिंग लाइक गोवा टू हैव अ फेस्टिवल ऑफ इफी स्टैचर हियर। और एब्सोल्युटली, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भारत की विविधता है वो भी पूरी की पूरी तरह से हमें यहाँ पर IFFI 2023 में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रीजनल सिनेमा की, अपार्ट फ्रॉम द बिग बॉलीवुड मूवीज, यहाँ पर आपको भारत के हर प्रांत, हर क्षेत्र की सिनेमा को देखने का मौका मिला लोगों को, और साथ ही हमें देखने को मिले नॉन फीचर फिल्म्स और साथ ही लैंग्वेज फिल्म्स, बिकॉज अब भारत उस स्टेज पर पहुंच चुका है जब भारत का सिनेमा केवल हिंदी सिनेमा नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने से आने वाला सिनेमा भी भारत का सिनेमा है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है। সবকিছু বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়। तुम मुखातिब भी हो और करीब भी, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, और जहां प्यार होता है वहां बंधन नहीं होता है। അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായിട്ട് എനിക്കത് നേരിട്ടറിയാവുന്ന. വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ 3ാം വാർഡ് വൈ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കും. അല്ല, അതിനപ്പ ഇലക്ഷന് കാണാൻ സമ്മതിച്ചോ? ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ശബരിമല കയറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണോ? എനിക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണണം. अच्छाई का बुराई पर अब डंका बजने वाला है. സോറി, യു കണ്ടിന്യൂ. ഫ്ലോ പോയി, ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. 4 പൊറോട്ടയും ബീഫ് തീർന്നുകൊണ്ട് താറാവ് റോസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ട് മുന്തിരി ജ്യൂസിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കട്ടൻ ചായയും കുടിച്ച് കടവും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നാത്താൻ കേസ് കൊടുന്നു. 50 വർഷം മുമ്പ് ഏതോ ഒരു കൊച്ചൗസേപ്പ് എഴുതിയ പ്രേമലേഖനോ. നെക്സ്റ്റ്. कीजिए साइन. ये क्या है? स्टेटमेंट. किसका? पुलिस वालों को शक हो गया. हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया. वध. பாலமண்டில் வைத்துக்கொள்ளதாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. And here we have on the red carpet the enchanting French actress Marianne Bogo. Bienvenue. Thank you so much, namaste. But I have to thank the festival IFFI, which has been this year a wonderful, wonderful year. And especially the Film Bazaar. I discovered plenty of young directors. And I was very happy to see my friend Shweta Bajag, who won the prize for a film, Work in Progress. And of course, the Salman Khan film, Fareh, was just unbelievable. And Tarka Singh was incredible. Well, I've seen this year fantastic, fantastic Indian films. So I'm totally refreshed, and it's been a wonderful festival. So looking back at the 9 days of IFFI, you've been here throughout the festival. Which was one highlight for you? Well, of course, this morning, the masterclass between Shailendra Singh and Michael Douglas, which is really the resume of 2 different cultures, because Shailendra has produced
92 films and has created Sunburn. And Michael Douglas also had this incredible parcours. So, you know, suddenly it was a reunion of two culture. Yes. And voila, cinema is dreams, and those dreams, through those dreams, you make bridges between culture and a better world. Absolutely. And that is what IFFI 2023 is all about, with its theme of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, isn't it? You greeted me in Hindi saying namaste, and I greeted you in French saying bye, bienvenue. Merci. And also thank you to Pramod Sawat for organizing this wonderful festival, to IFFI, and to your minister, Mr. Thakur, and to all the team, which has been amazing. So congratulations. Thank you, Maria, and for joining See us. over there these wonderful people who are the one from the UNESCO. Oh, yes. And they are doing a lot of things for the world. And a compliment, your bindi is beautiful. Well, it's something I learned from Indian culture. And when I put my bindi, I feel connected to the gods. Wonderful. Thank you, Marianne, for joining us. Merci beaucoup. तो ये था IFFI का सफर, जहां सितारों ने इस महफिल को सजाई है. चलते हैं अक्षय के पास. Well, just a while ago, my colleague Satyapriya and I were talking about the UNESCO ICFT medal, and I'm lucky to have on red carpet here with me John Thornblad, the director of the film, and John Febelstrom, the producer of the film called The Sugar Experiment, which has been nominated in the UNESCO ICFT medal category. And before I wish them luck for their award, let me go across them and have a word with them. John, thank you for taking time out. Good to have you on the red carpet. So thanks you so much for having us. We've been enjoying this festival so much. You know, in last 10 days or so has been very exciting. I'm sure you had a good time here in Goa. Yes, we had a really good time here, participating in the festival, seeing films, meeting new people and everything. So it's been lovely so far. John, please tell our viewers on Doordarshan a little bit about your film, The Sugar Experiment, that you made, which is nominated in this category. What this film is about, and you know, how did you go about this idea? I believe it's a very difficult theme to execute. Yes, the idea came from when we heard a radio documentary about this subject, and both me and Yuan heard it in separate ways. And when we were discussing what new film are we going to do, and that was the first thing that came to our mind. And the film is about a young couple that lives in a mental institution in the 1948s in Sweden. And so they make an experiment in this institution where they give sugar to the people who are like intakes there or in this institution, and they see if they get hole in their teeth or not. And of course they do. So. And John, you as a producer, when you came on board, was it like you know, good for you, easy choice to make as a producer? Yeah, of course it's difficult to do like historical movies like this with costumes and props and everything with this. And another thing is to work with people with disabilities, because the movie is about people with disabilities. We wanted to do it together with them, and so they could tell their own story. So that was the most challenging, I would say, yeah. All right, John and Johan, both of you, you've been absolutely sensational. Thank you so much for talking to us. We have an exciting closing ceremony lined up. We're not going to keep you waiting here. Please enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. Thank you. We're really looking forward to it. It's a good way to run out the trip. Thank you. Akshay, thank you so much. And here now, we on the red carpet, we are joined by two distinguished guests. I welcome, bienvenue, Monsieur Serge Michel, Vice President ICFT UNESCO, and Joan Hung, PCI Director and Jury Coordinator, ICFT UNESCO. Bienvenue. So how was the 9-day-long journey and ICFT UNESCO? Talking about movies which concern children, which concern peace and goodwill. So what kind of cinema did you get to see here? And all subjects in actuality, yes. And films are very interesting, of course. And we offer here a special prize, the Gandhi Medal. It's a symbol. Yes. And IFFI has selected 10 films, and we have choose, with a jury, we have choose one of these films, and the winner will be announced
during the closing ceremony. Yes, you also have the medal that will be presented to the winners. Can our viewers see this? This is the coveted medal that the films are competing for, the ICFT UNESCO medal here. You know, the ICFT is the International Council for Film, Television and Audiovisual Communication, and it's a partner for UNESCO. Yeah, and it's why we give this UNESCO medal with Gandhi. So you said that there were 10 films which were competing for this. I mean, you had seen 10 films. So out of these 10 films, what was the most important criterion for selecting the winner? The criterion are the criterion of non-violence, tolerance, peace, all criterion which are in heart of UNESCO and also in Gandhi symbol. Yeah. Yes. Talking about you, so you had also watched all the 10 films, did you? Not this time. This time I worked as a jury coordinator. I was a jury member last year, so we change jury members every year to have a more diversified choices. So I'd love to watch all the film after I'm going back to Paris, because it was a lot of job to do for the coordinating too. So. Yes, we have we make an international jury with 5 members, and the members receive the film and then have discussions about, because it is interesting in a jury to have discussion about the film, about topics and so on, and finally to choose one of the 10. Wonderful. Thank you. Thank you so much for joining here on the red carpet. Thank you so much. Over to Akshay. Well, thank you, Satyapriya, and a beautiful Bulgarian film, Blaga's Lessons, has been screened here at the 54th IFFI, and I'm lucky to have the lead actress Ali Skorcheva with me. Ali, welcome to the closing ceremony of 54th IFFI. Как се чувстваш? I will translate her. I'm happy. And аз съм доволна от това, че от реакцията на индийската публика. We are very happy because we meet the Indian audience, and they accept the movie very good. We worry how they're going to accept the movie. So they understand the story, I think. So we think so. Absolutely. Filmmaking is a universal language. Obviously, we have enjoyed you watching your film. The response has been good. Can you repeat the question, sorry? I said, obviously, the universal language of cinema doesn't need any translation. We love the film. Obviously, the response was good here. You happy with the response you got for your film? Да, аз точно това казах, че това ме направи най-щастлива. Yes, that's what she said, that makes her happy very much. Това, че филма беше разбран. For us, it was very important to understand the movie because it's a very local story about people in Bulgaria. So this is very different culture. Yeah. All right, it's been amazing talking to you. Thank you so much for talking to us. Enjoy the closing ceremony here. Thank you very much. Thank you very much. Such a pleasure it is to talk to these an international filmmaker. तो अगर बात करते हैं सिनेमा की, तो जितना ज़रूरी होता है उसमें पॉजिटिव किरदार यानी कि हीरो का किरदार, उतना ही अक्षय, आई एम श्योर आप मेरे से एग्री करेंगे, उतना ही ज़रूरी होता है नेगेटिव किरदार यानी कि विलन्स, क्योंकि विलन्स ही वो किरदार हैं जो हीरो को हीरो बनाते हैं. व्हाट डू यू से? Well, I totally agree with you, Satyapriya. मैं तो खुद एक फिल्म बफ हूँ और मुझे कभी भी ऐसा नहीं रहता कि फिल्म का हीरो कौन है या उस तरह से. मैं सभी एक्टर्स को देखता हूँ और फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग का जो नैरेटिव होता है, मुझे लगता है वो विलेंस उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं. और कमाल की बात है, इस बार इफ़ी में हमने एक स्पेशल सेक्शन उन विलेंस को डेडिकेट किया है और अमेजिंग विलेन जिनसे हमें डर लगता था, उनसे 1-to-1 लोगों को बात करने का मौका मिला. उन्होंने इंटरेक्टिव सेशंस किए यंग फिल्म मेकर्स के साथ, फिल्म लवर्स के साथ.
लेकिन खास बात अक्षय ये है, अगर हम खासकर भारतीय सिनेमा की बात करें, जितना प्यार लोगों का लीड एक्टर्स को मिलता है, यानी कि हीरो को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार कई बार विलन्स को मिलता है। और इस बात का टेस्टमेंट, इस बात का सबूत है कल का सेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो सेशन कंप्लीटली हाउसफुल था। लोग अपने फेवरेट विलन, चाहे रंजीत जी हो या किरण कुमार हो या द बैड बॉय गुलशन ग्रोवर हो, उनको देखने के लिए तांता लगाकर खड़े थे और पूरा हाउस फुल था, एब्सोल्युटली फुल। ओ आई टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह का कनेक्ट उन लोगों का अपनी ऑडियंस के साथ है, दशकों से वो फिल्म में रोल कर रहे हैं, भले ही नेगेटिव किरदार हो या उस तरह के पैरेलल लीड्स हो, एक रिचनेस देते हैं वो फिल्म के नैरेटिव को। और मुझे लगता है कि बिना उनके तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं होगी। फिर कहानी एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक आगे बढ़ेगी, लेकिन अंजाम तक कैसे पहुंचेगी अगर उसमें कोई विलन नहीं होगा। बिल्कुल। तो कैसा रहा कल का ये इन कॉन्वर्सेशन विद द विलन्स ऑफ बॉलीवुड? आइए देखते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। मैंने अपना टेलीविज़न करियर जो है वो दूरदर्शन शुरू किया था, और दूरदर्शन में हमेशा मेरा बहुत ही फेवरेट चैनल रहा। और अगर आपको याद हो, घुटन एक सीरियल किया था जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, वो भी दूरदर्शन का ही सीरियल था। फिर मेरा एक शो चलता रहा, काफ़ी अरसे तक चला, डिटेक्टिव करण। वो आज भी जब भी लोग मुझे मिलते हैं दूरदर्शन देखने वाले, तो हमेशा याद करते हैं कि डिटेक्टिव करण को हम बहुत मिस करते हैं। लोटिया पठान जब देता है तो कोई एहसान नहीं करता, और जब लेता है तो कोई लिहाज नहीं करता। तो जो भी यहाँ आता है उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी फिल्में देखने की। प्लस फिल्म जो है ग्लोबल फैमिली है, ये सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है। वी आर ऑल हियर। कुछ पेरू से आए हैं, कुछ फ्रांस से आए हैं, कुछ जर्मनी से आए हैं, कुछ यूएस से आए हैं। हम सारे के सारे मिलके ना एक परिवार की तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस फेस्टिवल का मज़ा लेते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है। तो इट्स वंडरफुल टू कम हियर। फिल्म है, वो टीवी हो, वो वीडियो हो, वो सीडी हो, वो ओटीटी हो, वो टीवी सीरियल्स हो, फिल्म का जो क्रेज है वो कभी खत्म नहीं होगा। विशंबर, हीरे बेचने वाले लकड़ी के डब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। लखन हमारा हीरो है, और इसको मायूस करना अपने धंधे को नुकसान पहुंचाना है। लाइफ में यार चेंज इज ऑलवेज देयर। जब हम लोग आए थे 55 साल पहले, तो पिछले किसी और सब्जेक्ट्स जो होते थे सोसाइटी के अलग होते थे। मैं जब पहली बार आया था, मेरे हाथ में एज ए विलन वो एक चाकू होता था, तर 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 खुलता था। उसके बाद में बटन दबाने वाला आ गया, उसके बाद में वो क्या नाम गन्स आ गई, फिर मशीन गन आ गई, फिर राइफल्स आ गई। तो ये ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड सो द कैरेक्टर्स आल्सो, द राइटर्स आल्सो। जो बिकता है वो लिखते हैं, प्रोड्यूसरों को अच्छा लगता है वो बनाते हैं, और जो उस कैरेक्टर में सूट करता है उनको लेते हैं। तो ये था IFFI 2023 के इन कॉन्वर्सेशंस में हमारे बैड बॉयज यानी विलन्स के साथ हमारी बातचीत। और अब रेड कार्पेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बेहद खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहूंगी उत्पल बोध पुजारी जी का। आप OTT अवार्ड्स के भी ज्यूरी मेंबर हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप खुद 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं, और ऐसे में जब आप OTT के कंटेंट को जज करते हैं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर? OTT स्पेस में अभी कंटेंट हैज़ एक्सप्लोडेड एज वी नो लास्ट फ्यू इयर्स। तो ये मैं मानता हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि ये जो अवार्ड यहाँ पे इस बार से शुरू किया जा रहा है। और उसमें आप कंटेंट का क्या व्हाट्स दैट वन थिंग वी आर लुकिंग फॉर एज अ जूरी व्हिच इज चेयर्ड बाय आवर रेस्पेक्टेड मिस्टर राजकुमार हिरानी जी, एंड वी हैव कृष्णा DK, प्रसन्नजीत चैटर्जी एंड दिव्या दत्ता जी एज members. The one thing, actually there's not one particular thing, but overall we look for good content, content that is very that speaks about our stories, Indian stories, and it represents India in a sense, and stories that we can take pride in, the storytelling styles, the treatment. It's like how cinematic the treatment is overall.
बात करते हैं कंटेंट की, तो उत्पल जी, आज का ज़माना, आज की फिल्म मेकिंग की बात करें तो आज का जो फिल्म मेकिंग है केवल नैरेटिव या स्टोरी लाइन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इतनी सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद आपको इतना सब कुछ देखने को मिलता है। आपके पास VFX हैं, AR है, VR है। तो जब आप एज अ ज्यूरी मेंबर किसी फिल्म को देखते हैं तो क्या आप इन एस्पेक्ट्स का भी ख्याल रखते हैं, और डू यू थिंक दैट द कंटेंट, द स्टोरी, द नैरेटिव इज द किंग? Yeah, see, I mean, whatever platform it might be, जो भी हो प्लेटफॉर्म या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया हो, अल्टीमेटली सिनेमा इज़ अबाउट कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग। सो वही हमेशा प्राइमेसी उसी का रहेगा, और उसके साथ जो हाउ वी यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, दैट ऑफ कोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ पॉजिटिवली वी हैव बीन एबल टू यूज़ दैट। एंड हम लोग जो OTT का जो वर्ल्ड वाइड जो सिनारियो है उसके साथ हम लोग कितना कम्पीट कर पा रहे हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एंड इन इंडिया अभी जो OTT स्पेस इज स्टिल ग्रोइंग एंड स्टिल इवॉल्विंग। सो दैट्स वाई आई थिंक जो हमारी जूरी की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि हम लोग उस टाइप का जो एक इंडियन आइडेंटिटी वाला जो कंटेंट है उसको जैसे हम लोग अगर बाहर का साउथ कोरियन कंटेंट देखें या किसी भी कंट्री का देखें तो उनका एक अपना एक आइडेंटिटी होता है स्पेसिफिक, इसलिए पूरा दुनिया में पॉपुलर होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इंडियन स्टोरी टेलिंग एंड इंडिया की ब्यूटी ये है कंटेंट की कि वी हैव such diverse content in so many languages. Absolutely. So the message is कि अगर भारतीय फिल्म मेकर हैं तो वो अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखें अपने फिल्मों में। थैंक यू सो मच उत्पल जी फॉर जॉइनिंग अस। ओवर टू यू अक्षय। All right, so we are talking about the opening film, we are talking about the closing film. I'm lucky to have Nouri Jailan with me. He's the director of the Midwest film, The Amazing About Dry Grasses. Nouri, thank you so much for taking time out. Please tell our viewers a little bit about your film and your experience here in the IFFI in Goa. It's my first time here in Goa. I liked it very much, but I've been in India many times actually. And in this festival, I'm coming for the first time. I think it's a long festival, yeah, about 20 years. Yeah, I've been in Calcutta and also in Kerala and in Delhi in festivals. I like India. It is the oldest film festival, the largest film festival. We are in the 54th edition here, and we are so lucky to have you here as the Midfest film. Please tell our viewers about the Dry Grasses, that your film, Midfest film, that share your thoughts on that. It's a long film, actually, more than 3 hours, and it's about a teacher who making social service in the east of Turkey. I made it from the diaries of a teacher. It's based on a real story, actually, and most of the film is taking place in a snowy part of Turkey, and. The title reminds me of Walt Whitman's famous book, Leaves of Grass. Yes, but we see the summertime at the end of the film only, yeah. All right, Nouri, thank you so much for talking to us. Enjoy the closing ceremony here. And it's time to go to Satyapriya once again. What she's up to, let's find out, Satyapriya. Thank you, Akshay. Thank you. And now we have on the red carpet a very distinguished guest. We welcome Mr. Guillermo Rodriguez from Spain. You are heading the Spanish delegation here at IFFI 2023. Looking at the relationship that India and Spain have had all these years, and especially through films, what would you say about that? Well, it's a very important moment. I think it's a crucial, game changer that India has approved new incentive schemes for co-productions. We signed a co-production treaty, which we are reviving now, and we are looking forward to collaborations such as festivals which can host co-productions. Most importantly, last year Carlos Saura got the Lifetime Achievement Award. Satyajit Ray was one of his icons, and it was an honor for him to receive it. His daughter came, Ana Saura. We had a very strong Spanish delegation, and because of that, I'm happy to announce that on 1st of December at the National Museum of Indian Cinema, Mumbai on Pedder Road, we are hosting the Carlos Saura
exhibition called Flamenco India. It had been his dream to do a film in India, searching for the roots of flamenco. He photographed everything, he prepared all the sets. We're showing that exhibition. It's the first time that the National Museum that is hosting the exhibition is having such an exhibit on a non-Indian filmmaker. So this is going to happen on 1st of December. We invite everyone to come at 11 a.m. And there's a surprise, there's going to be a flamenco show also. Wow. So I think India and Spain have very strong, deep bonds, and it's through dance, through music, and the films of Almodovar that everybody loves here, and of course Saura, and we have a similar language of understanding stories. And we are very confident there will be big new projects coming up. Bollywood is already coming to shoot in Spain, and it's not just Zindagi Na Milegi Dobara, but so many other films. And how do you see, and how does the Spanish film industry see India as a destination for their films? Oh, we also do that. We have an agreement. Our institution is Casa de la India, the Indian Cultural Center in Spain, which was set up by the government of India with the local partners of the city of Valladolid. And we've hosted in the recent years delegations coming to India as well. Recently there was a film shot in the Himalayas. It's called the Valley of Shadows, and it was shot entirely in Himachal Pradesh with some of our stars from the Netflix series Money Heist. And they have shot there just now. So India is becoming increasingly more popular to shoot here, and Bollywood shootings in Spain. Now the next step is to have joint co-productions. Thank you so much for joining us on the red carpet, and thank you for giving the wonderful news for all the cinephiles here in India to go and watch the exhibition in Mumbai starting 1st December. Thank you. Sure, very soon. Over to you, Akshay. Satyapriya and I, we've been talking about the closing film, the much awaited, the Featherweight, and I'm so happy and so lucky to have with me on the red carpet here the team of Featherweight, Robert Kolodny, the director, and his team. Robert, thank you so much, and lucky to have you here. Thank you so much. We're honored to be here. IFFI is an incredible festival. To be the closing night film in its 54th year means the world to us. And to have our team, our lead actor James Madio, our producer Bennett Elliott, and our screenwriter and producer Steve Loft, means the world to us to be able to engage with international audiences and show our film. I tell you, we had been talking about this film. Obviously, all the films that have been selected at the 54th IFFI have been amazing. Your film, The Featherweight, being the closing film, amazing feat and amazing, it's an amazing feeling to be the closing film of a film festival. It is. It's the first time I've ever been the closing film of a film festival, and it means the world to me. And I think our film, I hope audiences related to it, and it ends with a punch, so it's a good way to close out a festival. James Madio, as the lead actor of the film Featherweight, what's been your experience like of the film and also screening your film in Goa here? Well, it's pretty remarkable and special to be amongst you all and all this talent and beauty at this prestigious festival. I'm pretty humbled, to say the least, and to be to close the night as well, and to be here with the team, it's pretty special. A difficult film, both of you as actor and director and producer, all of you can have a word about it. Setting in the 1960s as a period film, also dealing as a sports drama, biographical, autobiographical film, difficult theme to handle. It's an exciting ship to helm, बात करें, आपने बहुत क्लोजली पूरे फेस्टिवल को फॉलो किया है. आपके लिए पर्सनली इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा? काफ़ी सारी चीज़ें थी. मतलब मैंने पहली बार एक हिमाचली कंटेंट देखा, जो उनकी भाषा है, उस भाषा का कंटेंट देखा. तो मुझे ऐसा लगा कि वाव, मतलब क्योंकि इतनी विविधता है हमारे देश में, इतनी भिन्नता है, एंड देन टू नो कि वहाँ कैसी चीज़ें बन रही है, वहाँ कंटेंट कैसे बनता है, क्या कंज्यूम होता है, टू अंडरस्टैंड कि उनके कल्चर की वाइब्स इन टर्म्स ऑफ सिनेमा क्या रिफ्लेक्ट होती है. बहुत मज़ा आता है ये सब जानने में, देखने में. You get to meet people, you get to meet your icons. एक जैसे मास्टर क्लास हुई थी on all the yesteryear villains. So just to hear all these iconic people talk on stage and how कैसे उन्होंने काम किया and कैसे वो इस रोल को अप्रोच करते थे. So for an actor, I think very enriching. आपने मराठी सिनेमा में बहुत काम किया है. अगर इफ़ी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इफ़ी ने वाकई जो एक पहले रीजनल और सो कॉल नेशनल सिनेमा का डिवाइड था, उसे किसी न किसी तरह से तोड़ा है? उसे आई थिंक तोड़ने में मदद डेफिनेटली की है, बिकॉज आई थिंक विद टाइम इट्स ओनली इंडियन सिनेमा.
एंड बहुत गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि ये भारतीय सिनेमा है, इस इंडियन सिनेमा। हमारी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारी बोली अलग अलग हो सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियन सिनेमा। सो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ अलग अलग स्टेट से फिल्में, उनका कंटेंट, शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, एंड अल्टीमेटली हम दुनिया को ये दिखा रहे हैं ना कि ये हमारा इंडियन सिनेमा है। सो you get to see the world cinema, you get to see Indian cinema, and then you also get to see that we are doing so much better in terms of world cinema now. We are out there and the world is watching us. तो जिन ऑस्कर्स के लिए कभी हम तरसते थे, लेकिन इस बार हमने देखा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री ने भी कमाल मचाया है और उसे ऑस्कर से नवाजा गया और स्पेशल सेशन रहा द रोड टू ऑस्कर्स पर। तो आपको लगता है दैट इंडिया हैज एक्चुअली अराइव्ड एट द ग्लोबल स्टेज नाउ? I genuinely feel और मैं बहुत, आई एम वेरी प्राउड इंडियन, मैं बहुत फक्र के साथ ये बात कहता हूँ कि आने वाला समय भारत का होने वाला है। मतलब नॉट दैट हमारा समय नहीं था, हमारा समय था ही, बट आने वाला समय इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट इंडिया। द वर्ल्ड इज गोना टॉक अबाउट अस। ऑब्वियसली, और जब कृष्ण के मुंह से ये बात निकली है तो कैसे ये झूठ हो सकती है? आई एम अ प्राउड इंडियन एंड आई विल ऑलवेज बी अ प्राउड इंडियन। तो इट्स वेरी हम्बलिंग टू सी जब ऑस्कर के स्टेज पे आपके देश का नाम पुकारा जाता है, एंड अ फेलो इंडियन गोज एंड रिसीव्स एन अवार्ड, एंड फेलो इंडियन टॉक्स अबाउट इंडिया एंड फिल्म मेकिंग एंड इंडियन सिनेमा। ऐसा लगता है हमको अवार्ड मिला है और वी आर ऑल वन। एब्सोल्युटली, और बहुत सारी गोपियां यहाँ पर हैं, इंतजार कर रही हैं आपके साथ सेल्फी लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अक्षय। The International Film Festival of India is only getting bigger and bigger even as we inch towards the closing ceremony. Two of the most amazing films, The Lonely Yurt and Snowstorm. I have the producer of these two amazing films with me. Let me go across them and find out about their experience. You know, one of the film has been a world premiere and one of there has been the international premiere here. What has been the response like premiering your film at the IFFI in India? I will translate to him because Please do. speak English. So ол сұрап жатыр да қалай сізді қарсы алды? Рахмет, 54-ші Индия халықаралық кинофестивалына бізді жаңағы өте жоғарғы деңгейде қарсы алды деп ойлаймыз. Адамдардың кішіпейілділігі, адамгершілігі, сондай-ақ кино өнеріне деген тазалығын бойларынан көруге болады. He's very happy that this festival, 54th International Film Festival, invited his movie. He's very happy to present this, and he's very happy with the people who actually were very friendly and kind. So he thanks for this. The film, obviously, as you talked about the Lonely Yurt and the Snowstorm, obviously, you know, amazing opportunity for Indian viewers to watch these films, which usually do not get the release here. And for you as well, you know, premiering a film in a massive country like India here, you know, showing it almost to the half of the world. Yeah, it is actually really great experience, I guess, for us, because it's a good opportunity to, as you said, to show the almost for half of the world. And the Indian people so kind, and they actually liked very much our movies, and they said many good warm words about both of our films. So thank you so much. We're very happy. Thank you so much for talking to us, ma'am. Thank you, sir. There's a lot more lined up for you even in this closing ceremony. Please go ahead, enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. Yeah, sure. में है